आज हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे? द टेंस। आज हम लोग क्या जानेंगे? द टेंस। द टेंस क्या है? द टेंस ऑफ वर्ब shows the time when an actions take place. The tense क्या है? The tense of verb shows the time when an actions take place. Principally there are three tense. Principally there are three tense. Tense कितना तरह का होता है? 3 तरह का। Present tense, past tense, future tense. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी सब डिवाइड में डिवाइड किया जाता है। क्या? इन ऑर्डर टू शो एट what stage the actions in each tense is subdivided into 4 heads. In order to show at what stage the action is each tense is subdivided into 4 heads. जैसे इंडेफिनाइट टेंस, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब डिवाइडेड में इन 4 भागों में भाग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को। कैसे? जैसे therefore प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शंस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शंस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल्स, when subject of first or and second person and plural noun I, me, my, we, our, us, you, your, yours. Therefore जैसे affirmative positive sentence, subject first form of the verb plus object negative sentence, subject do not plus first form of the verb plus object, interrogative sentence do plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. Example, I go to school, we do not play now, do you read this lessons, interrogation marks. आप यहाँ पर देख सकते हैं रूल्स का हिसाब से, फॉर्मूला का हिसाब से एग्जाम्पल दिया गया है। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटीग्रेशन मार्क। आप एग्जाम्पल को भी देखिए। एग्जाम्पल, I go to school, do not, we do not play now, do you read this lesson? Next rules क्या है? When subject or third person and singular noun he, she, it, Ram, Sita, etc. then added s or es with verb. When subject or third person or singular noun he, she, it, Ram, Sita, etc. then added s or es with verb. verb का संग s और es joint हो जाएगा। therefore जैसे affirmative positive sentence, subject plus first form of the verb plus
S or yes plus object. Negative sentence, subject plus does not plus first form of the verb plus object. Interrogative sentence, does plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. Example, he goes to market. Ram does not play football. Does he work his homework? Does he write? Does he write his homework? इंटरगेशन मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का ही गोज़ टू मार्केट. नेगेटिव सेंटेंस राम डज नॉट प्ले फुटबॉल. इंटरगेटिव सेंटेंस डज ही राइट हिज होमवर्क. इंटरगेशन मार्क्स. नेक्स्ट, uses of present indefinite tense. Uses of present indefinite tense. First uses क्या है? Habitual actions in the sentence always, never, seldom, often, sometimes, daily, regularly, every day, every week, every month, every year, once a week, twice a week, etc. Adverbs will present. Example क्या है? I take bath early morning every day. She goes for a walk every morning. They play football at 4 p.m. daily. Next uses क्या है? General और universal truth. General और universal truth क्या है? Example, the sun rise in east. The sunset in west. The earth moves round the sun. The sun gives light in the day. The moon shines at night. Next, third uses क्या है? Permanent truth. Example, this road leads to hospital. This road leads to hospital. Agra stands on the bank of the Yamuna. Agra stands on the bank of the Yamuna. Cellular gel stands on the bank of seashore. Next, present continuous tense. Present continuous tense क्या है? To express an actions that is going on the present time. Present continuous tense क्या है? To express an actions that is going on the present time. Rules. Positive sentence क्या है? Subject plus am is a plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence, subject plus am is a not plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence, am is a plus subject plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. When use am is a, कब हम लोग am is a को यूज़ करेंगे? am हमेशा I का संग यूज़ होता है. is, he, she, it एनी सिंगुलर नाउन का संग यूज़ होता है. are, you, they, we एनी प्लूरल नाउन का संग are यूज़ होता है. am, I, is, he, she, it एनी सिंगुलर नाउन. are, you, they, we एनी प्लूरल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, I am playing football. She is writing a letter to her father. They are revising their lessons. He is not sleeping now. We are not working here. Are you going to market? Interrogation marks. Is he reading this book? Interrogation marks. Next, uses of present continuous tense. Present continuous tense का uses क्या है? First uses to express an actions in which these days, now, nowadays, still, at this time, at this moment, at present, etc. Adverb is present in the sentence.
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फर्स्ट यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शंस इन विच these days, nowadays, still, at this time, at the moment, at present, etc. Adverb is present in the sentence. Example, they are working in this building nowadays. He is playing football at this time. Next uses क्या है? To indicate an actions that is planned to take place in the near future. Next uses क्या है? To indicate the actions that is planned to take place in the near future. Example क्या है? I am going to Kolkata on tomorrow. They are playing cricket on Sunday. Next, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड. रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव plus not plus third form of the verb plus object. Interrogative sentence, has have plus subject plus third form of the verb plus object plus interrogation marks. Has have कब यूज होता है? has का यूज he, she, it, any singular noun. और have का यूज you, I, they, we, any plural noun. तो हैज़ किसका संग यूज होएगा? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन. और हैव किसका संग यूज होएगा? यू, आई, दे, वी, एनी प्लूरल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फादर. आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फादर. ही हैज़ प्लेड लूडो. शी हैज़ नॉट cooked dinner. They have not finished their work. Have you completed your work? Next, uses of present perfect tense. Uses of present perfect tense. क्या uses है present perfect tense का? First uses to express an actions in which before once, twice, thrice, several times, etc. present in the sentence. Uses of present perfect tense क्या है? First uses to express an actions in which before once, twice, thrice, several times, etc. present in the sentence. Example क्या है? I have seen this film before or several times. They have not written their homework till. They have not written their homework till. Next uses क्या है? To express an actions in which already, so far, as yet, just, now, till now, recently, presently, this week, this month, this year, etc. present in the sentence. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शंस इन विच ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सेंटेंस. एग्जाम्पल क्या है? शी हैज़ पास्ड क्लास 12th ऑलरेडी. वी हैव नॉट टेकन आवर ब्रेकफास्ट एज येट. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? एन एक्शंस दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन. रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing plus object. Negative sentence,
subject plus has, have plus not been plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence has, have plus subject been plus first form of the verb plus ing plus object plus इंटरोगेशन मार्क्स. इसका संग सिंस और फॉर भी यूज़ होएगा. आप हमेशा याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का संग कंटिन्यूस में ing ऐड हो जाता है और इसका संग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर भी सेंटेंस में यूज़ होएगा ऑब्जेक्ट का बाद. सिंस और फॉर कब यूज़ होएगा? व्हेन वी यूज सिंस और फॉर. सिंस यूज विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम, विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर यूज विथ ए पीरियड ऑफ टाइम. सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे he has been eating breakfast since 7:30 a.m. He has been eating breakfast since 7:30 a.m. I have been writing my homework for 2 hours. They have been playing football since 4 p.m. She has been cooking food for 1 hour. Children have been swimming in the pool since 3 p.m. Next, uses of present perfect continuous tense. Uses of present perfect continuous tense. क्या uses हैं? To express an actions that is begun in the past and still going on. Uses of present perfect continuous tense क्या है? To express an actions that is begun in the past and still going on. Example क्या है? I have been living in this house for 2 years. She has been waiting for you for 1 hour. They have been working in this building since last month. Next, past indefinite tense और simple past tense. Past indefinite tense और simple past tense क्या है? An actions that act in the past. Past indefinite tense और simple past tense क्या है? An actions that act in the past. रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? रूल्स सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क्स. एग्जाम्पल क्या है? आई वेंट टू स्कूल. शी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी. डिड ही राइट दिस लेटर? इंटरोगेशन मार्क्स. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस. यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस. फर्स्ट यूजेस क्या है? To express an actions in which past time is indicated by yesterday, last day, last month, last week, last year, ago, etc. Uses of past indefinite tense क्या है? First uses to express an actions in which past time is indicated by yesterday, last day, last month, last week, last year, ago, etc. Example, I drew this picture last year. She won a prize last month. They did not play football last Sunday. We did not go to picnic last week. Next,
नेक्स्ट यूजेस क्या है? सेकंड यूजेस टू एक्सप्रेस एन actions which occupied a period of time in the past which is now ended. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस एन actions which occupied a period of time in the past which is now ended. एग्जाम्पल क्या है? He lived in Delhi for 2 years. They worked in this building for 3 months. We wrote our homework for 3 hours. Next, past continuous tense. Past continuous tense क्या है? An actions that was going on in the past time. Past continuous tense क्या है? An actions that was going on in the past time. रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वायर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? रूल्स सब्जेक्ट प्लस वॉज वायर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वायर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटीग्रेटिव सेंटेंस was were plus subject plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. was were का यूज़ कब होएगा? when we use the was were. was का यूज़ I, he, she, it, any singular noun. was का यूज़ किसका संग होएगा? I, he, she, it, any singular noun. और where का यूज़ you, दे, वी, एनी प्लूरल नाउन. वेयर का यूज़ किस में होएगा? किसका संग? यू, दे, वी, एनी प्लूरल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज राइटिंग ए लेटर. दे वेर स्लीपिंग एट दैट टाइम. वी वेर गोइंग टू पिकनिक. ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. राम वॉज नॉट playing at that time. Was she cooking food? Question marks. Next, uses of past continuous tense. Uses of past continuous tense. First uses क्या है? To express an actions that was going on in the past time. Past continuous tense when past indefinite tense. Uses of past continuous tense क्या है? First uses to express an actions that was going on in the past times. Past continuous से लेके when और उसका बाद past indefinite tense फिर से यूज होएगा. For example कैसे? She was reading a book when you came. She was reading a book when you came. They were playing football when she said. We were dancing when he went. Next uses क्या है? To express two actions when it was going on side by side, then both sentence must be written in past continuous tense. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस टू एक्शंस when it was going on side by side, then both sentence must be written in past continuous tense. Example, well, she was reading. Her brother was writing. Well, they were playing football. He was sleeping. Next, post perfect tense. Post perfect tense क्या है? An actions that completed at the past times before another actions was begin. Past perfect tense क्या है? An actions that completed at the past times before another actions was begin. Rules क्या है? Positive sentence subject plus first form of
सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क्स। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेशन सेंटेंस इंटीग्रेटिव सेंटेंस had plus subject plus third form of the verb plus object plus interrogation mark. Next example क्या है? The thief had left the place before the police came. The thief had left the place before the police came. The patients had died before the doctor came. The train had left the stations before I reached there. The bell had rung before I reached school. Next, uses of past perfect tense. Uses of past perfect tense. First uses क्या है? An actions had completed before another actions begun. Uses of past perfect tense क्या है? First uses an actions had completed before another actions began. Past perfect tense before past indefinite tense. Example, the rain had started before my father went to office. I had written my homework before my friend came. I had written my homework before my friend came. My breakfast had done before 9 o'clock. Next is क्या है? An actions began after mother actions had completed. Next is क्या है? An actions began after mother actions had completed. Past indefinite tense after past perfect tense. Example क्या है? The police came after the thief had gone. The police came after the thief had gone. I reached there after the train had left the station. I reached there after the train had left the station. Next, past perfect continuous. Past perfect continuous tense क्या है? An actions that was finished in the past but which had been going on before it was finished. Past perfect continuous tense क्या है? An action that was finished in the past but which had been going on before it was finished. Rules क्या है? Positive sentence subject plus had plus been plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence subject plus had plus not been plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence had plus subject plus been plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. इसका संग सिंस और फॉर भी यूज़ होएगा। सिंस और फॉर का यूजेस क्या है पहले भी हम लोग जाने हैं तो आपको याद होएगा। सिंस का यूज़ विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज़ विथ ए पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग in Kolkata for 2 years. He had been working in this building since October 1996. They had been revising their task for a week. They had been revising their task for a week.
नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? एन एक्शंस दैट इज येट टू हैपन। रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस shall or will not plus first form of the verb plus object. Interrogative sentence shall or will plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. shall और will का यूज़ कब होएगा? shall किसका संग यूज़ होएगा? I, we, you और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन। will का यूज़ कब होएगा? he, she, it, राम, they और थर्ड पर्सन का संग विल यूज होएगा। शैल का यूज आई, वी, यू और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का संग विल का यूज ही, शी, ईट, राम, दे और थर्ड पर्सन का संग यूज होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई शैल गो टू स्कूल, ही विल प्ले फुटबॉल, दे विल सिंगिंग ए सॉन्ग, वी शैल नॉट bath in the river, will Ram write his homework? I shall go to school, he will play football, they will sing a song, we shall not bath in the river, will Ram write his homework? Interrogation mark. Next uses of future indefinite tense। फर्स्ट यूजेज क्या है? यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शंस इन विच फ्यूचर टाइम्स इज इंडिकेट बाय टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा। यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट यूजेज क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन विच फ्यूचर टाइम्स इज इंडिकेट बाय टुमारो, next day, next week, next month, next year, etc. एग्जाम्पल क्या है? I shall go to Agra tomorrow. They will play cricket next Sunday. She will write this question's answer next week. We shall depart for Kolkata next year. We shall depart for Kolkata next year. Next uses क्या है? To express an actions in which future indefinite tense is written after the adverbial clauses. Therefore, in the sentence must be have if, unless, when, etc. Next uses क्या है? To express an actions in which future indefinite tense is written after the adverbial clauses. Therefore, in the sentence must be have if, unless, when, etc. Example: if you work hard, you will pass. Unless you meant you wish, you will never success in life. When you come to my home, I shall play football. When you come to my home, I shall play football. Next, future continuous tense. Future continuous tense क्या है? An actions that will going on at some times in the futures. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एन एक्शंस दैट विल गोइंग ऑन एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर। रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल नॉट बी plus first form of the verb ing plus object.
इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई शैल बी, एग्जाम्पल क्या है? आई शैल बी कुकिंग एट दिस टाइम टुमारो। आई शैल बी कुकिंग एट दिस टाइम टुमारो। शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक इंटरोगेशंस mark. Will they be playing football? Will they be playing football at this time next week? Interrogations mark. Next, future perfect tense. Future perfect tense क्या है? An action that will be completed at some point of time in future. Future perfect tense क्या है? An actions that will be completed at some point of time in future. रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस shall or will plus subject plus have plus third form of the verb plus object plus interrogation marks. Next example क्या है? I shall have written your money. I shall have written your money. She will have gone to Port Blair. They will not have revised their lesson. I shall not have taken a bath before the sunset. Will he completed his work? Interrogation marks. Shall you have got ready before the bus arrived? Shall you have got ready before the bus arrived? Interrogation marks. Next, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? एन एक्शंस विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? एन एक्शंस विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस subject plus shall or will plus have been plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence क्या है? subject plus shall or will not have been plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence क्या है? shall or will plus subject plus have been plus first form of the verb plus ing plus object प्लस इंटरोगेशन मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स होम एट द टाइम ऑफ समर वेकेशंस। एग्जाम्पल क्या है? आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स होम एट द टाइम ऑफ समर वेकेशंस। शी विल हैव बीन डूइंग दिस सम फॉर 10 minutes. She will have been doing this sum for 10 minutes. Will they have been working in this office for 3 years? Question marks. Will they have been working in this office for 3 years? Question marks. Next. तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या जाने हैं? टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और यूजेस भी पढ़े हैं टेंस का। यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यूजेस ऑफ पास्ट टेंस, यूजेस ऑफ फ्यूचर टेंस। इसका सब डिवाइडेड भी पढ़े हैं, उसका भी सब डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड का यूजेस भी। थैंक यू।